students, welcome back to my channel. Today I am discussing the recap of the chapter for class 7th, chapter 4, photosynthesis and respiration in plant. As most of them you have asked me to give the notes and in the form of a recap of this chapter. So we have a quick recap of this chapter. What is photosynthesis? Photosynthesis, it is a process by which green plants make their food from simple molecules like carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. So this definition you have to remember. What is photosynthesis? It's a process by which green plants make their food from simple molecules like carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. Now what are the raw materials required for photosynthesis? Raw materials required for the process of photosynthesis: carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. Carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. Right? What are the product forms after photosynthesis? The glucose. Glucose is stored. It is stored in the form of starch in the leaves. Carbon dioxide and water combines with the help of the sunlight in presence of chloro. Formation of glucose takes place and oxygen is given out. Where does the photosynthesis takes place? Leaves. They are the site of photosynthesis. Now during the photosynthesis, the raw materials carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll, from where they obtain. Carbon dioxide they get from the stomata, from the atmosphere. Water is absorbed by the root through the root hairs. Sunlight we get from the sun, solar energy. Chlorophyll, it is present in the leaves itself. Now the process of photosynthesis, this process involves two reactions. First is the light reaction, second is the dark reaction. During light reaction, what happens? Energy from sunlight is used and stored as ATP molecule. What happens in the light reaction? Energy from sunlight is used and stored as ATP molecule. During dark reaction, here light reaction, light is essential. Dark reaction means light is not essential for the process of photosynthesis, right? So here energy of ATP molecules is used to combine carbon dioxide and water to make food. यहाँ पर क्या होता है, सनलाइट से एनर्जी जो मिलती है वो एटीपी फॉर्म में स्टोर होती है और यही एटीपी एनर्जी यूटिलाइज होती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कंबाइन करके ग्लूकोज बनाने में, दैट इज C6H12O6. द फॉर्मेशन ऑफ दिस अकर्स ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, राइट? Now here photosynthesis, it depends on the light, temperature and water. मतलब if sunlight का टेम्परेचर, जो सनलाइट है अगर इसकी इंटेंसिटी अच्छी है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी. क्यों? मैक्सिमम 34-35 पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अच्छा 34 के ऊपर फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डाउन तक. हाई टेम्परेचर टिल 34 डिग्री, 34 डिग्री टेम्परेचर तक, ये 25 से 30 तक, 32-33 तक तो फोटोसिंथेसिस का रेट अच्छा. लेकिन 33 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तब फोटोसिंथेसिस का रेट डाउन है. और वाटर तो चाहिए, बिना वाटर के तो कोई रिएक्शंस हो ही नहीं सकते. तो वाटर डिपेंड्स ऑन लाइट, टेम्परेचर एंड वाटर. दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच फोटोसिंथेसिस डिपेंड. नाउ इट इज एसेंशियल एज इट प्रोवाइड. फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है, ये इसके लिए आवश्यकता क्या है? ये बिकॉज इट प्रोवाइड्स फूड टू एवरीवन. ये सभी के लिए फूड प्रोवाइड करता है and it provides life gas that is called oxygen. ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हम सभी लोग. रेस्पिरेशन, अब नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का आता है रेस्पिरेशन. नाउ डिफरेंट पार्ट्स दे रेस्पायर इंडिपेंडेंटली. हर पार्ट्स प्लांट के अलग अलग तरह से रेस्पायर करते हैं. मेन प्रोसेस जो रेस्पिरेशन का होता है वो है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. सराउंडिंग मीडियम की जो डिफ्यूजन होता है उससे. लीव्स कैसे? इसमें डिफ्यूजन स्टोमेटा, स्टोमेटा की ओपनिंग होती है. जैसे ये देखिए स्टोमेटा ओपन है, इसी स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डे. रूट्स में सेल्स के बीच में जो एयर स्पेसेस होते हैं उन सेल्स के बीच में एयर स्पेसेस से रेस्पिरेशन होता है. स्टेम में लेंटिकल्स. लेंटिकल्स क्या होते हैं? ये स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. दीज लेंटिकल्स आर प्रेजेंट एंड दे थ्रू दीज लेंटिकल्स. आज ये देखते हैं, ये देखिए ये जो ओपन पेयर्स होते हैं इनको हम लूजली अरेंज सेल्स होते हैं स्टेम, बार्क ऑफ द स्टेम में. यहाँ से जो है ये लेंटिकल्स से जो है
लेंटिकल्स से जो सेपरेशन यहाँ पर स्टोमेटा से होता है, यहाँ पर एयर स्पेसेस के सेल्स के बीच में एयर स्पेसेस से होता है। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कितने होते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन means respiration which takes place in presence of oxygen, it is called aerobic respiration. Anaerobic respiration, respiration which occurs in without oxygen or absence of oxygen, absence of oxygen अगर प्लांट्स में ग्लूकोज एथिल अल्कोहल में चेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलती है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्लो होता है क्योंकि कम एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि वो फिक्स होते हैं एक जगह। एनिमल्स में जो एनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है एब्सेंस में, इसमें ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में चेंज होता है और एनर्जी रिलीज होती है बहुत कम अमाउंट में, ये मसल्स में होता है। लेकिन नॉर्मली एनिमल्स में जो है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीद आउट करते हैं, वाटर यूज्ड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और एनर्जी विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ। तो ये है इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपके दो चीज और इंपॉर्टेंट होती है, क्या है मेन? Differences between aerobic and anaerobic respiration. Food is broken down in the presence of oxygen, food is broken down in the absence of oxygen. Complete breakdown of glucose into carbon dioxide and water, incomplete breakdown of glucose, large amount of energy is released, very less amount of energy is released. और एक आपका ये और आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, food is broken down to release energy, food is synthesized by green plant, carbon dioxide is released as a byproduct, oxygen is released as a byproduct in photosynthesis. In respiration occurs both in plants, here photosynthesis only in green plants. It takes place throughout the day and night, it takes place only during the day because in presence of sunlight. Here chlorophyll and sunlight are essential, here chlorophyll and sunlight are not. That is what are important about this chapter. Aerobic respiration, anaerobic respiration, we have photosynthesis, lenticles, that is the small openings present on the surface of the old stems from the carbon. See this, you can see that these definitions, they are also essential for, they are important, right? That's all for today. Again, we will meet in the next video with more important work. Thank you.